डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ वी हैव टू सॉल्व द ऑफ एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.2। ये हम देखेंगे अपनी किताब पर जो है, आप देखें आराम से लिखा क्या गया है। पहला जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स हैं। तो लिखा है form the pair of linear equations in the following problems and find their solution graphically. So we had to convert these problems into the pair of linear equations in two variables and then plot their graphs and find their solution by the graphical method. तो यहाँ पे पहला पार्ट जो है इसमें आप देखें 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. So the total number of students are 10. If the number of girls is 4 more than the number of boys, the condition is given that number of girls is more than the number of boys. जितने लड़कियां ज़्यादा हैं 4 लड़कों की तादाद से, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हमने जो बोलना है that is we had to determine number of girls and boys. यहाँ पर हमारे जो अननोन्स हैं दैट इज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. सो लेट अस सपोज दीज टू अननोन्स एज वेरिएबल्स. सो इन दो अननोन्स को जिनको हमने मालूम करना है इनको हम रिप्रेजेंट करें बाय टू वेरिएबल्स. यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमने पहले देखना है कि अननोन क्या है. अननोन है हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स. लेट अस सपोज लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, चलो जो लड़कियां हैं उनकी तादाद मानो वो है x. दैट इज डिनोट दैट इज एन अननोन फॉर अस. वो हमारे लिए अननोन है कि हम उसको वेरिएबल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे. दैट इज बाय x. एंड नंबर of boys, both are unknowns, both we have to determine. That's why we represented them by variables. Is equal to, let me denote it by variable y. So x and y now represent the number of boys and girls and boys respectively. Now हमारी जो पहली कंडीशन है 10 students of class 10th, total number of students we have are 10. Since total number of students taking part in the quiz are 10, number of students will be number of girls plus number of boys. That is, this total number will be x plus y, that is equal to 10. So in this way we got the equation first. So इस तरह से हमने इक्वेशन पहली पाई. Now also as per the other condition, number of girls is more than the number of boys, that is 4 more than number of boys. That is the difference between these two, number of girls minus number of boys. If we, that is x minus y is equal to 4. वो number of this means that, इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां जो हैं और लड़कों की तादाद में जो फ़र्क है वो 4 का है. यानी लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से 4. इस तरह ये हमारी दूसरी बनी. नाउ अब इन दो इक्वेशंस को लेकर के इनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफिकल मेथड से हम इनका सोल्यूशन निकालेंगे. हम सीखेंगे कैसे हम सोल्यूशन का डिटरमाइन करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी विल टेक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 we get, what we get from equation 1 we have to write down. X plus y is equal to 10. We will solve it for some values and determine them.
हमने क्या करना है, हमने एक्स को यहाँ रखें और वाई को वहाँ ले आए, ट्रांसपोज करें तो 10 माइनस वाई बनेगा. सो वी एक्स तो डिपेंडेंट है वाई पर. नाउ एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई. तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड ए वैल्यू टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट के लिए वैल्यू टेबल होगा. इसको हम वन राउंड रखेंगे इस वैल्यू टेबल का. यहाँ पर हम वैल्यूज लेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू लेंगे. whenever you substitute for x x now depends upon y, x डिपेंड करेगा y पे, और y का वैल्यू अब लेंगे, y का हम वैल्यू अगर लेंगे, y का हम डिफरेंट वैल्यू देंगे. मानो y का वैल्यू हम लेंगे 4. what will be the value for x? X will be equal to 10 minus 4, that is equal to 6. That is x is equal to 6 whenever y is equal to 4. So we will write in the value table the values of the x and y respectively. X is equal to 6, then y equal to 4. So first value we got over here. Now the second value, if you put y equal to 5, x will be equal to 10 minus 5, that is equal to 5. Implies that x is also equal to 5. On substituting y equal to 5 in this equation, let me write the name, no longer needed, star. So whenever y is 5, x is also 5, so we got another pair, that is 5 and 5 is another pair of values. Similarly, you can get another value if you wish to do, और हम चाहें तो कर सकते हैं. if you put in this star equation y equal to some value, let us equal to 6, we get x equal to 10 minus 6, implies that x will be 10 minus 6 minus 4. So another pair we get over here is 4 6, another pair 4 6. So this is the value table for equation first. Now similarly we can calculate the values from the equation second. From equation second, what is the equation second? That is x minus 4, x minus y is equal to 4. Imply that x is equal to y can be transposed to the right, so you will get 4 plus y. So for different values, if you put in this equation y equal to 1, x will be equal to 4 plus 1 means 4 plus 1 is equal to 5, that is x is equal to 5. So we can plot, or we can record these values in a value table. जैसे हमने पहले इक्वेशन में किया, तो यहाँ पर जो वैल्यू था, पहला वैल्यू जो है x का 5 है और ये y 1 है उस वक्त. दूसरा वैल्यू लिखेंगे, इफ यू पुट y equal to in this double star equation, y equal to 2, x equal to 4 plus 2 implies that x equal to 6. So and the value is 6 whenever y is 2. When y is 2, x is 6. Similarly, if you put y equal to 3, because x depends upon y, so x is independent and x is dependent and y is independent variable. वैल्यूज ऑफ y आप चुन सकते हैं और वैल्यू ऑफ x आ जाएगा. y के बदले अगर 3 लगाओगे इसमें, तो x का जो वैल्यू आएगा 4 प्लस 3 आएगा, प्लस x will be equal to 7. So this is the value for x when y is equal to 3. So x is 7 when y is equal to 3. So we got this pair. 3 7 6 2 and 5 1 are the values of x and y for equation second. So this will be value table for equation second. Now we will plot these on a graph paper.
Now for equation first we can do it. For equation first, now for equation first, so we can plot them on a graph paper. The values for equation first are 6, 4. You can plot this on the graph paper, x-axis and this is y-axis, and then mark the equidistant points on this 1, 2 and up to some value. We don't have here negative values, so we can mark it -1, -2, -3 and so on. And the negative y-axis you can mark -1, -2, -3 and so on. Now first pair is for equation first we have 6, 4. 6, 4 is here. This 6 is x coordinate is 6 and y coordinate is 4. That is 6, 4 is here. So similarly 5, 5 and 4, 6 are the pointers over here. Upon joining these pointers we get a line. Let's plot the graph for equation first like this. So this line represents equation first. This is equation first. Your equation that is x plus y equal to 10. X plus y is equal to 10. Equation first. This represents equation first of your question. Now similarly you can plot the graph for equation second. नाउ हमारी इक्वेशन सेकंड के जो वैल्यूज़ हैं टेबल में वो ये हैं 5, 1 एक पेयर है, तो 5, 1 यहाँ पर एक पेयर है, हमने यहाँ पर नोट किया है पॉइंट, 6, 2 है, 7, 3 है, तो हम एक लाइन इनके दरमियान गुजारेंगे, ऐसे तो लाइन गुजारेंगे इन पॉइंट्स में, किसी और कलर्स में गुजारूंगा लाइन को, लेट मी बाय ब्लैक पेन. So what we get is the another line. This line will represent your equation second, that is x minus y is equal to 4. So this is your equation second. Now we look into the graphs of two equations, that is equation first and equation second. Now these two lines intersect at a point. This common point, it will be the solution of these two equations. This intersect common point, solution, common point, and its coordinates are 7, 3. That is x coordinate is 7, so x is x, and there is y. So x is 7 and y is 3. Therefore, the common point, that is 7, 3, intersect. Point of intersection of graphs is 7, 3. This point. So this point is the solution. So 7, 3 is the solution of equations 1 and 2. That is यहाँ पर जो पहला है, that is x coordinate, first entry represents x and the other represents y. x और ये y है, x is equal to 7 and y is equal to 3. Therefore, from graph we get, what we get is that x is equal to 7 and y is equal to 3. That is x, we have supposed x with number of girls. So number of girls is x is 7 and number of boys is 3. X, that is number of girls 7 and number of boys is 3. This is the solution of our problem by the graphical method. So it is done for today. Hope you might have got it.